Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of University of Education, once again I welcome you all in the lecture number 21 of Computer Communication and Networks. Students, what are the learning objectives of our today's lecture? In our today's lecture, we will know about the error detection methods. So, once if the error has been detected, we should have to know that how we will correct the errors. For that, we should have to know that what are the types of error, and then after this, we will know that what are the techniques of error detection. They are the parity check, cyclic redundancy check, and the checksum. Today we will know about the parity check. In the later next lecture, we will study about the cyclic redundancy check and the check. Students, networks must be able to transfer data from one device to another with complete accuracy. In the previous lecture, what we have studied that how to transfer data from one place to another place. That is, we can transfer data from one place to another place by using a transmission medium. Here, in during that transmission, there won't be any error. So, but error can be occur. ये कोई we cannot say that कि error हो ही ना. But अगर error हो जाता है, तो हमने करना क्या है? So, data can be corrupted. We all know that during the transmission, data can be corrupted. For reliable communication हमें क्या चाहिए है कि if the data is corrupted, if we have found some error, that must be detected first of all, and after the detection हमें सिर्फ उसको detect नहीं करना, we should have to know that how to correct them. So for that purpose, we have a system that cannot if we have to know that how to detect and correct method. So there are different methods to which we can detect and correct the errors. System that cannot guarantee that the data received by one device is identical to the data transmitted by one another device is essentially useless. So anytime the data is transmitted from source to destination, it gets corrupted on the way. So many factors including like a noise can alter or wipe out one or more bit of a given data unit. So reliable systems जो होते हैं, they must have a mechanism for detecting errors and for the correcting errors. So error detection and correction is implemented either at the data link layer or at the transport. Students, what are the types of errors? There are two types of error. One is the single bit error and another one is the burst error. Whenever an electromagnetic signal flows from one point to another point, होता क्या है? It is subject to unpredictable interference from heat, that can be magnetism and other form of electricity. So if the signal is carrying encoded binary data, such changes can alter the meaning of the data. So we should have to know that what is the single bit error and what is error. Student, single bit error कैसा error होता है? A zero is changed to one. Only single bit error occurred. Zero is changed to one and one is changed to zero. Only one bit in the data unit has been changed. यहाँ पे जो है वो सिर्फ ज़ीरो जो है वो वन हो सकता है और वन जो है वो ज़ीरो हो सकता है. यू कैन सी कि डाटा जो है वो सेंड क्या किया गया था, ज़ीरो 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 वन ज़ीरो, और डाटा जो रिसीव हो रहा है उसमें सिर्फ ये वाली जो ज़ीरो बिट है दैट हैज़ बीन चेंज बाय द वन. सो ज़ीरो चेंज टू वन ओवर हेयर. सो यहाँ पे students, next one is the burst error. Burst error is a in burst error multiple bits are changed. So burst error means that two or more than two bits in the data unit have changed. So for example अगर हम कहते हैं कि in burst error हमारे पास जो है वो zero, we have 0.01 जो है वो आपके पास जो है second burst है of second.
burst है of impulse noise on a transmission with a data rate of 1200 bits per second, और इसका जो data rate है that is 1200 bits per second. Um, इसका क्या मतलब है? They might change all or some of the 12 bits of information. So the term single bit error means that only one bit of a given data unit, such as that it could be a byte, character or packet, is changed from 1 to 0 or 0 to 1. So in what is happening in the burst error, the term burst means that two or more bits जो हैं वो change होती हैं until a unit and from 1 to 0 or from 0 to 1. So this figure shows the effect of a burst error on a data unit, and in this case 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 जो है वो receive हुआ. Note that the all the burst sent हुआ और receive हुआ 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1. So students, you can see that a burst error, ये note कर लें कि burst error doesn't necessarily mean that error occurred in the consecutive. So the length of burst is measured from the first corrupted bit to the last corrupted bit. So some bits in between may not have been corrupted. So burst error is most likely to happen in the serial transmission. So the duration of the noise is normally longer than the duration of a bit, which means that when noise affects data, it affects the set of bits. So the number of bits affected depends on the data rate and the duration of the noise. For example, if we are sending data at 1 kilobits per second, अगर हम 1 kilobit per second से data जो है वो send कर रहे हैं, तो नॉइज़ जो है वो एंड द नॉइज़ इज कितनी है? सिर्फ 1/100 सेकेंड. सो दे इट इज ये क्या करेगा? अगर आपके पास 1 किलो बिट्स पर सेकेंड का डाटा आप भेज रहे हो और नॉइज़ जो है वो 1/100 सेकेंड जो है उसको इफेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि 10 यहाँ जो है वो 10 बिट्स जो है वो अफेक्ट हो रही हैं यहाँ पे. सो इफ़ वी आर सेंडिंग डाटा एट 1 meg, अगर 1 किलो बिट्स पर सेकेंड की स्पीड पर आप डाटा भेज रहे हैं और नॉइज जो है 1/100 सेकेंड है, तो ये आपकी 10 बिट्स को इफेक्ट करेगा. और अगर हम जो है वो डाटा 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से भेज रहे हैं, तो द सेम नॉइज कैन इफेक्ट द 10,000 बिट्स. सो यू कैन सी कि जितना बड़ा डाटा होगा उतनी बड़ी बिट्स जो है वो इफेक्ट करेंगी. सो फॉर दिस वी शुड हैव टू नो द एरर डिटेक्शन मेथड्स. स्टूडेंट्स, इवन वी नो what type of error can occur, will we recognize one when we see it? So how? So if we have a copy of the intended transmission for a comparison, of course we can do this. So then we will have no way of knowing we have received an error until we have decoded the transmission and failed to make sense of it. So for a device to check for errors this way, it will be costly and slow. So we don't need a machine that decodes everything and then sits and decides whether a specific word make a sense or not. So we need for this mechanism the simple and complex complete objectives, and that is called a redundancy. Redundancy क्या होता है? That is actually error detection uses the concept of redundancy. जो क्या करता है वो कुछ extra bits add कर देता है किसके लिए? Errors को detect करने के लिए at the end of the destination. One error detection mechanism है that would satisfy these requirements would be send every data unit twice, so the receiving device would then be able to do a bit for bit comparison between two transmissions. So any discrepancy will indicate an error, and an appropriate error correction mechanism should be set in place. So this system will be completely accurate because the odds of errors affecting the same bit in both versions will be infinitesimally small. But the system will be extraordinary slow. आपका जो सिस्टम है not only will the transmission time जो है आपका double हो जाएगा, but the time it takes to compare two data units जो हैं is also added up.
So what is the concept for including extra information? Redundancy का concept क्या है? Redundancy are called as some extra information जो है वो हम add कर रहे हैं. तो इसका ये concept ये है कि transmission solely for the purpose of a comparison of is a good one. So instead of repeating the entire data stream, हम वही shorter group जो है उसको bits की form में append करेंगे at the end of each item. So or each unit. So this technique is called redundancy because the error bits are redundant to the information and are discarded as soon as the accuracy of transmission has been determined. Here you can see this figure shows the process of using redundant bit to check the accuracy of data unit. Once the data stream has been generated, होता क्या है कि the data unit now enlarged by several bits, 7 bits है जो travel करेंगी over the link, over some link travel करेंगी, and the receiver puts the entire stream through a checking function. So if the received bit stream passes the checking criteria, the data portion of the data unit is accepted and the redundant bits are discarded. So data is what is happening here. This is a sender data. Here we have added some redundant bits. Then data travels from the medium, and after that आप सब जो है data receive होगा same data जो यहाँ से गया है, और then check होगा कि data is okay. अगर okay है तो data को में से हम redundant bits separate कर देंगे, otherwise data को जो है वो reject कर देंगे. Students, here we should have to know that what are the methods of error detection. Error detection methods कौन से हैं? There is a parity check method, there is a cyclic redundancy check, and there is a checksum. This will be covered by we will cover today. That is a parity check and the cyclic redundancy check and checksum we will discuss in our next lecture. Students, what is meant by a parity check? This is the most common and the least expensive method or mechanism for the detection of error. That is called a parity check. Parity can be a simple or it can be two-dimensional. Here parity has two types. One is the simple and another one is the two-dimensional parity. Students, what is meant by a simple parity check? In this technique, a redundant bit that is called a parity bit is added to every data unit so that the total number of ones in the unit, including the primary bit, becomes even or odd. यहाँ पे आपके पास जो है वो एक बिट स्ट्रीम होगी जो 8 बिट्स होंगे इंक्लूडिंग द पैरिटी और रिडंडेंट बिट, और अगर आपके पास जो है 8 बिट्स के अंदर लेट सपोज वी हैव 1 0 1 1 1 0 1 7 है और हमारी जो 8th बिट है वो हम देखेंगे कि अगर तो ये आपके पास जो है इवन पैरिटी है तो 1 2 3 4 5 वंस है तो द रिडंडेंट बिट शुड बी 1, क्योंकि हमें करने क्या है, हमें वंस जो है वो इवन करने हैं. और अगर ये ऑड पैरिटी होती देन दिस 0 becomes 1 becomes 0. Why? Because we have 1 2 3 4 5 ones already. That is an odd parity. Let's discuss what is an even parity. सेंडर नोड में 1 1 0 0 0 0 0 1 जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ओवर डाटा ट्रांसमिटिंग है. यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे पैरिटी बिट. इवन पैरिटी है, व्हाट विल हैपन ओवर हियर, नंबर ऑफ वंस काउंट होंगे, दे आर 3 वंस हैं तो, और इवन पैरिटी है तो यहाँ पे जो है वो 1 आएगा सो दैट नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन हो जाएंगे. देन इट कम्स फ्रॉम द ट्रांसमिशन मीडिया. जो बिट्स रिसीव होंगी उन बिट्स को सबसे पहले काउंट किया जाएगा. अगर जो नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो ड्रॉप पैरिटी बिट एंड एक्सेप्ट द डाटा, अदरवाइज डाटा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. Here we will see one example. Suppose the sender wants to send the word world. Sender भेजना चाह रहा है word in ASCII. The 5 characters are coded as
अब ASCII में आपके पास जो है वो वर्ड के इक्विवेलेंट यू कैन सी द ASCII कोड्स स्मॉल लेटर वर्ड के लिए आपके पास जो है वो आप ASCII कोड्स देख लें 11101111 ये आपके पास कितने टोटल बिट्स हैं 7 बिट्स हैं we will see the showing the following shows the actual bits and कितनी थी they are 1110111 सबसे पहले क्या करना है कि number of ones count करने हैं हमने बनाना क्या है we want to make an even parity हमने देखा कि यहाँ पे number of ones already even है तो यहाँ पे we have put 0 over here then in the next one जो O का ASCII है वो हम they are actually W ASCII this is about O ASCII R ASCII and L and D ये सबके ASCII कोड्स हैं जैसे कि आपको पता है कि एवरी लेटर एवरी कैरेक्टर जो कीबोर्ड से जनरेट होता है उसके अगेंस्ट एक ASCII कोड है क्यों ASCII कोड होते हैं दे आर इन द जीरोस एंड वंस और ये क्यों होते हैं बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज विच इज अ बाइनरी लैंग्वेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस So you can count the number of ones. There are 3 ones and 6 ones total, and the parity bit is 0. Again, 1 1 1 3 4 5 6 6 ones. Again, the parity bit is 0. 1 2 3 4. There are 4 1. Again, the parity bit is 0. We are making an even parity 1 1 0 1 1 0 0. Again 0. Here the number of ones are odd. There are 3 ones है यहाँ पे तो यहाँ पे आपके जो है वो हमने ऐड कर दी parity bit as a 1. Example number 2. Now suppose the word in example 1 is received by the receiver without being corrupted in transmission. So this is 1110 1110 110 11 यहाँ पे आपके पास देखें कि parity bit is added ऑलरेडी रिसीवर क्या करेगा सबसे पहले नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा वो कहता है कि 1 2 3 4 5 6 अगेन 1 2 3 4 5 6 6 देन 4 वंस है देन 4 वंस है देन 4 वंस है सो द डेटा रेट इज एक्सेप्टेड क्यों क्योंकि ऑल नंबर ऑफ वंस जो हमें रिसीव हो रहे हैं दे आर एन इवन Student, now suppose the word world in example 1 is corrupted during the transmission. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? So again, the same thing will happen when the receiver counts the ones. Receiver ones count करेगा 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 ones. 1 2 3 4 5 6 6 ones. 1 2 3 4 5 5 ones. 1 2 3 4 ones and 4 ones. Receiver counts the ones in each character and come up with even and odd numbers. The receiver knows that the data are corrupted because all numbers should be an even. So वो क्या करेगा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा और वो सेंडर को दोबारा से रीट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा Students, a simple parity check can detect all single bit error. यहाँ पे सिर्फ single bit error को detect किया जा रहा है. It can not detect a burst more than 2 या 2 या 2 से ज़्यादा errors को detect नहीं कर रहा. So it can detect burst error only if the total number of errors in each data unit is odd. मतलब अगर आपके पास number of ones even नहीं आ रहे, odd आ रहे हैं, this is the only way कि ये जो है ये detect करेगा कि आपके जो हैं वो bits में कोई error है. So this method cannot detect error where the total number of bits is even. But sometimes ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो डाटा में error आया हो, but उसमें number of ones फिर भी even ही रहे हों. Then how can we identify? तो हम कैसे ये चीज़ identify करेंगे कि still there is some error? उसके लिए
टू डायमेंशनल पैरिटी चेक एरर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ. दैट इज अ बेटर अप्रोच. इन दिस मेथड अ ब्लॉक ऑफ बिट्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल. और वो टेबल में किस तरह से टेबुलर फॉर्म में जब डाटा को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो रॉज और जो है वो कॉलम्स की फॉर्म में किया जाता है. Then we calculate the parity bit corresponding to each row और column के against जो है वो हम फिर जो है वो parity bit को जो है वो count करेंगे. Here you can see a two-dimensional parity bit check error method. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. They all are the 7 bits data stream. Here we will add parity. If first of all, what we will do, we will count the number of ones. 1, 2, 3, 4, 5 है. जबकि हमें even parity बनाना है तो हम यहाँ 1 लगा देंगे. Then 1 2 3 4 5 again odd है तो again यहाँ पे जो है वो 1 आ गया. Then 0 1 1 1 3 4 ones हैं तो 0 आ गया. 1 2 3 3 ones हैं तो आप देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ वंस को ऑड बनाना है, अगर सॉरी इवन बनाना है. और अगर नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी आपके इवन है तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे. और अगर नंबर ऑफ वंस आपके जो है वो ऑड है तो यहाँ हम जो है 1 पुट कर देंगे. इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी हमने हमने रॉ और कॉलम दोनों के साथ जो है वो पैरिटी बिट चेक करनी है. हेयर वी हैव 1 2 2 वंस हैं तो 0 आ गया. 1 2 3 वंस है तो इवन बनाना है 1 आ गया. 2 वंस है 0 आ गया. 3 वंस है अगेन 1 आ गया. 2 वंस है डोंट नीड टू मेक इवन, ऑलरेडी इट इज इवन. अगेन 1 है तो हमने 1 करके इसको इवन वंस कर लिए. और यहाँ 4 वंस है तो हमारे पास 0 आया. और हम पैरिटी को भी यहाँ पे चेक करेंगे. रॉ पैरिटीज और कॉलम पैरिटी के अंदर हमारे पास जो है वो 1 1 1 3 वंस है तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया. अब डाटा ट्रांसमिट क्या होगा? दिस इज रॉ 1, दिस इज रॉ 2, दिस इज रॉ 3, रॉ 4. रॉ 1 का डाटा सबसे पहले ट्रांसमिट होगा. दैट इज 1 1 0 0 1 1 1 1 इंक्लूडिंग हम पैरिटी बिट लेंगे. ये वाली पूरी लाइन जो है वो सबसे पहले यहाँ आ गई. फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और एंड में ये वाली लाइन आ गई. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द टू डायमेंशनल पैरिटी चेक जिसके अंदर आपके पास जो है डाटा जो है वो डबल साइडेड चेक हो रहा है. सो दैट यहाँ पे अगर सिंगल बिट पैरिटी है तो उसके उसमें यहाँ पे कैसे हम सीखेंगे ये बात कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी डाटा ऑल्टर तो हुआ है लेकिन एक से ज़्यादा बिट जब ऑल्टर होगी है डाटा रिमेन्स. अगर आपके पास इवन नंबर रहता है यानी कि नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास ऑल्टर होने के बाद भी अगर इवन रहती हैं देन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द एरर. सो उस काम के लिए ये जानने के लिए कि हमने टू डायमेंशनल पैरिटी चेक सीखा कि जब डाटा जो है वो दोनों साइड से चेक हो रहा है. Dear students, the next two methods we will study in our next lecture. This is end of our today's lecture, and the what we have learned today, we have studied about the single bit error and about the worst error. In the next lecture, we will learn about the cyclic redundancy check and the checksum error detection methods. So you should have to know that data can be corrupted. So errors अगर हो सकते हैं लेकिन अगर एरर हो गया है तो वी शुड हैव टू नो दैट वेयर दैट एरर इज अकर्ड. सो फॉर दैट वी शुड हैव टू डिटेक्ट द एरर एंड आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ एरर वी शुड हैव टू करेक्ट them. Thank you very much students. Allah Hafiz. Stay home and stay safe.